I1 I2 root L1 L2. When you add and subtract both these terms, then it becomes your half I1 root L1 minus I2 root L2 का होल स्क्वायर प्लस I1 I2 root L1 L2 minus m that is equals to greater than equals to 0. Okay, यहाँ तक, because this energy is always greater than or equals to 0. ठीक है यहाँ तक. Now what term should be 0, what term should equals to be 0? If you apply this thing, then I1 comma I2 cannot be equals to 0, then what term should be 0? Then your L1 minus L1 L2 minus m should be greater than equals to 0. Then m is less than or equals to L1 L2. So this is the correct expression in terms of your mutual inductance and self inductance of the primary and secondary winding. प्लीज इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यही है. ठीक है, मैंने डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि जो आपके एग्जाम में रिजल्ट है वो डायरेक्ट आएंगे. इनके प्रूफ लिटिल बिट लेंथी है और प्रूफ की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको. ठीक है, यहाँ तक. अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम इसी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले देखें तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा हमारा. हाउ वी कैन सॉल्व अवर न्यूमेरिकल. नाउ फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस अगर हम इसको फॉर्मूले को कैसे यूज करना चाहेंगे तो देखिए कैसे आएगा. m इज इक्वल्स टू k root L1 into L2. ठीक है यहाँ तक. So where k is what? K is called coupling coefficient. So coupling coefficient अगर हमारा वर्ड आया है तो इसकी डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में मिलेगी. L1 L2. So this is the first definition of the or the numerical formula for the coupling coefficient. अब coupling coefficient क्या होता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि coupling coefficient क्या है. ठीक है. So let's define your coupling coefficient. Now the definition of the coupling coefficient. तो अगर मैं definition दूं उसकी definition जो है it is a measure of coupling between two coils. और अब measure of coupling का मीनिंग क्या होता है. मेजर ऑफ कपलिंग मीनिंग का ये है, अगर मैं प्राइमरी से कुछ फ्लक्स सेंड कर रहा हूं देन व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट फ्लक्स इज एट द सेकेंडरी टर्मिनल्स. ओके, सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं 100 फ्लक्स लाइन 100% फ्लक्स में भेज रहा हूं प्राइमरी से और सेकेंडरी पे जो है वो 95% पहुंच रहा है, देन योर कपलिंग कोएफिशिएंट वैल्यू इज 0.95 95% and 5% is your leakage or the self flux. That's the meaning of the measure of coupling between two coils. So the formula for the coupling is it is the ratio of it is 5:2 or it is 5:1 upon 5:2 plus 5:1 or the mutual upon the total flux. Now we will define your coupling coefficient as is defined as the ratio of the mutual flux to the total flux. If you apply your definition to the circuit first, देखिए सर्किट फर्स्ट में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उनके बीच में म्यूचुअल फ्लक्स था 1-2 और जो टोटल फ्लक्स था इसी को बोलते हैं हम टोटल फ्लक्स 5-1. दैट इज द सेल्फ फ्लक्स एंड द म्यूचुअल फ्लक्स. सो कपलिंग कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द म्यूचुअल फ्लक्स टू द टोटल फ्लक्स. नाउ अगर ये इसकी डेफिनेशन है म्यूचुअल फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स, ठीक है, तो आइडियल और जो मैक्सिमम वैल्यू है कपलिंग कोएफिशिएंट की वो कितनी हो सकती है. अगर हमारा 100% जो फ्लक्स प्राइमरी पे है वो सेकेंडरी पे पहुंच जाए तो जो हमारा कपलिंग कोएफिशिएंट है यानी कि जो कपलिंग है या मेजर ऑफ कपलिंग वो 100% होना चाहिए और 100% मतलब 1. तो ये देखिए 1 कब आएगा, 1 ये जब आएगा इफ, अगर इसमें ए पार्ट देखें या थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट अगर देखें, इफ द लीकेज फ्लक्स 511 or 522 that is called phi leakage in case of your transformer is 0, then you apply this thing k is equals to phi
1 2 upon phi 1 2 or phi 2 to 1 upon phi 2 1, that is equals to 1. So your coupling coefficient is 1 when your leakage flux is 0, and when your coupling coefficient is 1, the coupling is called perfect or ideal coupling. So K1 implies that your 100% primary flux is reaching to your secondary part, and that point is known as the perfect or ideal coupling. So K equals to 1 is called perfect coupling or ideal coupling. ठीक है यहां तक. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो देखिए क्या हुआ. K इक्वल्स टू अगर आ जाए आपको 0.75, K इक्वल्स टू क्या आ जाए 0.75, then K equals to 0.75 is known as the tightly coupled coil. Okay, then if you take K equals to 0.5, then it is called loosely coupled coil. ठीक है. Now where we found the tightly coupled and the loosely coupled, your iron core transformer is an example of tightly coupled. Example is iron core transformer are tightly coupled, and the loosely coupled transformer are your example की बात करें तो air core transformer is an example of loosely coupled. Now if you take next part of this, K is 0, and K is 0 means what? There is no coupling. That means your coils are not having any magnetic connection. Also electrical connection is not present, that sure, but your magnetic connection is not possible, so it is called isolated coils. ठीक है. Now K की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और K की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है. K1 का मतलब है परफेक्ट आइडियल कपलिंग, बट कभी भी आइडियल कपलिंग तो मिलेगी ही नहीं. 100% जो फ्लक्स है आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंच जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि लीकेज फ्लक्स कुछ ना कुछ तो होगा ही. तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं इसकी रेंज की, तो K की जो रेंज है वो कितनी होगी. सो K इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 0. सो K इज रेंज इज दिस. ठीक है यहां तक. सो दिस इज अबाउट योर the self inductance of two coils when connected in series, adding and opposing. Similarly, the self inductance in parallel connection, either adding and subtraction, polarity and magnetic energy stored. Then we will see the coupling coefficient value and coupling coefficient से related definition, कितनी इसकी range होगी, क्या बेस्ट है हमारे आयरन कोर ट्रांसफार्मर के लिए या एयर कोर ट्रांसफार्मर के. नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो हम देखेंगे इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो अब अपना स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट पॉइंट ऑफ म्यूचुअली कपल्ड सर्किट, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो इफ यू सी द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, okay, so let's see mutual inductance. Now by the same token, your L1 is N1 phi 1 upon I1, L2 is N2 phi 2 upon I2. But when you see M12 is what? It is what? From 1 to 2, it is N1 phi 1 2 upon I1. Similarly, M21 from the secondary coil, it is N2 phi 2 1 upon I2. Okay, so if you see the mutual inductance is what? N into the mutual flux. It is called mutual flux upon current. Okay, so mutual flux or mutual inductance may be defined as the ratio of the flux linkage to the current, but here the flux should be of mutual from the primary and secondary winding or secondary to primary winding. So this is the first point about the mutual inductance. And next, see the formula for the mutual inductance. If you see mutual inductance is the LA minus LB upon 4. That is what? series adding minus series subtracting or opposing, meaning is same, upon
4. So this is the second formula of the mutual inductance. Now if you would see the fourth formula of the mutual inductance. Now if you see mutual inductance is K L1 L2. So these are the three formula for the mutual inductance, and the fourth point about the mutual inductance is unit. So if unit is handy, first unit is handy as the unit of inductance. Now if you see the next unit of the mutual inductance, then V is M di over dt, M di over dt. Then you see the M is equals to V upon di over dt. So what is that? It is volt ampere per second, and that is called, it is ampere here, it is ampere per second or volt second upon ampere. Okay, I hope so ये बात समझ में आ रही होगी. Now the fifth point about the mutual inductance is what? The fifth point for the mutual inductance is mutual inductance and mutual voltage. Mutual voltage may be positive or negative. That depends upon the dot terminal. Okay, so let's take two diagram, and what is the meaning of that? Mutual inductance may be positive or maybe negative. So let's take two diagram of these two. Okay, then you will have clear picture of these two. So I take two diagram of the mutual inductance. It is I1 here, it is dot here, and this is M. And we will take one more diagram for this, and this one is for, it is I2 is coming from here, so it is M. Okay, so it is here I just write V2, but here I will take V1. And what are they? I will tell you. Similarly, I will take two diagram here. So either one dotted, it is I1, and here it is V2. And similarly, I just take one more diagram for this. Okay, so here this, and it is I2. Now, what is the meaning of that? In the first figure pair diagram, in the first pair diagram, current is either entering or leaving in the both dots simultaneously, then your mutual voltage is positive. That is equals to V2 equals to M di by dt. Similarly, here M is positive. Similarly, if you write here M V1 equals to M di2 over dt, but here it is di1 by dt. Now, if the current is entering or leaving dot in both winding same, then your mutual voltage and mutual inductance is positive. But if your current is entering at one dot and leaving to the other dot, then your mutual voltage is negative. It is minus M di1 by dt. Similarly, this voltage V1 is called minus M di2 dt, and in that case the M is negative. So your mutual voltage is maybe negative or positive. That depends upon the current is entering or leaving dot terminal simultaneously, or one is entering and another is at leaving, then your mutual voltage is negative. So this is about just magnetically coupled circuit. After that we will see our numerical portion of the magnetically coupled circuit. So start करते हैं अपने magnetically coupled circuit से related numerical. So start करते हैं अपने numericals on the magnetically coupled circuit. तो देखते हैं क्या है हमारे numericals. पहला numerical है हमारा. Let's change the marker first, then we will write the question. So first question जो है हमारा है, the resonant frequency
resonant frequency, the resonant frequency of the given circuit, of the given circuit is, ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है हमारे, 1/2 पाई √3 हर्ट्ज। बी ऑप्शन जो है हमारा है 1/4 पाई इंटू √3 हर्ट्ज। सी ऑप्शन जो है हमारा है 1/4 पाई √2 हर्ट्ज। एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1/पाई √2 हर्ट्ज। ठीक है यहां तक। और डायग्राम जो है आपके क्वेश्चन में दे रखा है ये, और एक कैपेसिटेंस भी दे रखा है, इसकी वैल्यू है 2 फैरेड, 2H, और ये भी है 2H। यहां पर एक डॉट दे रखा है, यहां पर एक डॉट दे रखा है, और इन दोनों के बीच में M की वैल्यू दे रखी है 1H। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल ऑन द मैग्नेटिक सर्किट। सो अगर इस न्यूमेरिकल की बात करें हम, सो अगर ये हम डायग्राम देखें, दोनों जो इंडक्टेंस है मैग्नेटिक फॉर्म में लगे हुए, सो अगर हम यहां से करंट देखें, तो करंट अगर देखें तो दोनों टर्मिनल पे करंट जो है एंटर करेगी, यहां भी करंट एंटर करेगी, यहां भी करंट एंटर करेगी। तो ये जो दोनों इंडक्टर हैं वो सीरीज एडिंग पोलैरिटी में लगे हुए, और सीरीज एडिंग पोलैरिटी मैंने आपको क्या बताया था, L1 प्लस L2 प्लस 2, यही फॉर्मूला बताया था। तो L1 है 2, L2 भी है 2, और ये कितना देगा 2 × 1, तो ये हो गया 4 और 6 हो गया। ठीक है, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 फैरेड। अब अगर आपको याद हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो हमने रेजोनेंस में पढ़ा था, F0 = 1/2 पाई √LC, यही जो था फॉर्मूला, तो 1/2 पाई √LC। L की वैल्यू कितनी आ गई 6, और C की वैल्यू है 2। सो अगर हम इसको पेयर में बना लें तो 3 × 2, तो 2 तो एक बाहर आ गया, तो ये हो गया 1/4 पाई और √3 हर्ट्ज। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 1/4 पाई √3 हर्ट्ज, 1/4 पाई, 4 पाई ये रहा और रूट में 3, तो यही हमारा तो ऑप्शन हुआ। सो फॉर दिस डायग्राम द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1/4 पाई √3 हर्ट्ज। देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगा। Let's see our next numerical on the magnetic circuit. So our next numerical is when inductors are connected, sorry ये next numerical देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, what two coils are coupled, two coils are coupled in such a way, that the mutual inductance between them is 16 मिली हेनरी। ठीक है यहां तक। अगली बात करें, if the inductance of the coils are 20 mH and 80 mH respectively, the coefficient of coupling is the coefficient of coupling is, और आपके ऑप्शन रहे, just wait, I will tell you the option. Where are the option? So I think missing or not. So your option here, yeah, we are having option 0.01, 0.4, and then we have 0.1, and the last option is
0.0025. Okay, so let's see the answer now. Two coils are coupled in such a way that the mutual inductance between is 16 mH. तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है 16 mH और द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स is L1 is 20 and L2 is 80. Then if you remember your formula, mutual inductance, coupling coefficient and the self inductance is M equals to K root L1 L2. So K is what? M upon root L1 upon L2. So M is how much? 16. Okay, and L1 is what? 20 into 80. Okay, so 16 upon 2 into 8 and it is 100. So 100 का 10 बाहर आ जाएगा, 16 into 10 बाहर आ गया और अब इनको पेयरिंग कर लें, 2 into 2 into 2 into 2. ठीक है, यहाँ तक 3 यानी 2 2. So it is 16. 10 तो ऑलरेडी आ चुका है, 4 बाहर आ जाएगा तो it is 4 and 4 डिवाइड बाई 10 that is 0.4. देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं, यस मैच कर रहा है. अगर इसमें मैं कमेंट करना चाहूं तो ये लूज कपलिंग है, टाइट कपलिंग है, परफेक्ट कपलिंग, कैसी कपलिंग है? सो लूजली कपल्ड circuit and loosely coupled circuit are used in your electronics, that is in air core transformer. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा. See the next question. So next question is the current in the coil, the current in a coil, the current in a coil, the current in a coil changes from 5 ampere to 1 ampere in 0.4 second. ठीक है यहां तक. The induced voltage is 40 volt. Is 40 volt. The self inductance in Henry is, ऑप्शन देखते हैं अपने. ऑप्शन है 1, फिर है बी है 2 और सी ऑप्शन जो है आपका है 4 और लास्ट ऑप्शन जो है 10 हेनरी. ठीक है यहां तक. तो देखते हैं क्या होगा आंसर ना. सो अगर हम इन सेल्फ इंडक्टेंस और वोल्टेज की बात करें तो हमें याद हो VL इक्वल टू होता है L di/dt. ठीक है यहां तक. Now this may be written as L di1 upon d, sorry d, it is di2 minus di1 upon dt. ठीक है यहां तक. सो अगर हम पहले इसको सॉल्व कर लें L, और हमारी करंट कहां से कहां चेंज हो रही है? 5 से 1. ठीक है, 4 हो गया ये, डिवाइड बाई 0.4. ठीक है, 10 हो गया, सॉरी ये 10 आ जाएगा यहां से. ठीक है, सो योर L इज VL अपॉन 10 और VL कितना है आपका 40. सो 40 डिवाइड बाई 10 दैट इज 4 हेनरी. सो योर ऑप्शन शुड बी सी करेक्ट. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है हमारे. सो देखते हैं क्वेश्चंस ऑन मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है two coupled coil with two coupled coils with L1 L2 equals to 0.6 H. ठीक है, have a coupling coefficient of K equals to 0.8. ठीक है यहां तक. The turn ratio is that is given to you N2
N1/N2। आपके ऑप्शन जो है वो है, पहला है 4, अगला जो ऑप्शन है वो है 2, अगला जो ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन जो है डी दैट इज 0.5। देखते हैं इसका क्या आंसर होगा ना। So two coupled coils with having inductance 0.6 0.6 have a coupling coefficient of this. So what is the turn ratio? First I will take the turn ratio from the transformer. I studied that V1/V2 is N1/N2 is equals to I2/I1, that is equals to N, the turn ratio. So turn ratio is what? N1/N2. Okay, so we don't have any relation with L and N now. I just want to N1/N2. Now if you remember, L is proportional to N square. L is proportional to N square. Then L1/L2 is equals to N1/N2 whole square. So your N1/N2 is what? Root L1/L2. So you can modify your transformer equation also. That is equals to what? L1/L2. ठीक है यहाँ तक। अब L1 और L2 तो मुझे पता है, L1 और L2 जो हमें पता है, L1 और L2 कितने हैं? 0.6 तो ये तो 1 आ जाएगा भाई, और 1 का रूट 1 ही आएगा। सो N1/N2 है जो आपका टर्न रेशियो 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। सो वी आर हैविंग सी ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज an air cooled solenoid of 250 tons has a cross sectional area A is equals to 80 centimeter square। ठीक है यहां तक। and length is 100 centimeter। ठीक है यहां तक। the value of its inductance is ठीक है। ऑप्शन जो है हमारे देखते हैं क्या है? 0.425 mH। बी ऑप्शन जो है हमारा है 0.628 mH। सी ऑप्शन जो है हमारा है 0.75 mH। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका वो है 0.904 mH। ठीक है यहां तक। सो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। Question number, this. So let's see the air cooled solenoid. Now if you remember your solenoidal formula, so your inductance is equals to N square by S, that is equals to N square mu naught mu R A upon L. If you remember your inductance formula, because this question is directly asked on formula based. So number of turns is what? Number of turn is 250, so it is 250 का whole square, and mu naught is 4 pi into 10 की power minus 7, and there is nothing given about the magnetic material, so take relative probability 1 for the air or vacuum, it is 1, and A, the area is how much? 80 into 10 की power minus 4, okay. Then length is how much? 100, length is 100 into 10 की power minus. So if you calculate this, you will get your answer 0.628 mH. Okay, so your option should be B correct. Now next question, ये हम बात करें तो क्या है देखते हैं। So let's see the next question on magnetic circuit.
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है in a mutually coupled circuit, the primary current is reduced from 4 ampere to 0 in 10 microsecond. Okay, a voltage of 40,000 volt is given to you. 40,000 volt is observed across the secondary, observed across the secondary. ठीक है यहां तक. The mutual inductance between the coils is option है आपके 100H, then next option जो है आपका है 10H, C option जो है आपका 0.1H और लास्ट ऑप्शन जो है आपका है 0.01H. देखते हैं क्या होगा इसका आंसर. सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. In a mutually coupled circuit, the primary current is reduced from this to this. Okay, then secondary. So first you take diagram. Diagram is like that. In the primary circuit, the current is from 4 to 0. It is changing from 4 to 0 ampere. In how much second? It is given to you in 10 microsecond. But at that time, you are observing voltage at the secondary side, V2, and it is how much? 4,000. So obviously, this voltage is by the phenomena of mutual inductance. Now, if you remember the mutual inductance phenomena, then V2 is what? It is M di1 over dt. It is this V2 is M di1 over dt. There is a mutual voltage due to the current of primary. Okay, because there is no current in the secondary winding. So your M is equals to V2 di1 upon dt. Now, so let's first find the di1 by dt. So the current is changing, reduced from 4 to 0, so it is 4, and your dt is what? It is 10 microsecond. So 10 microsecond is what? 10 to the power 6. We just cancel out 1, so it is 4, 10 to 10 to the power 4, 4 into 10 to the power 4. So your d by dt value is this. Now M is what? So V2 upon 4 into 10 to the power 5. Now if you solve this, V2 is how much? Yeah, V2 is 40,000, 4000, and it is what? 4 into 10 to the power 5. So this 4 power is cancelled out 1 power, then it is 4 upon 40. So then it is 0.1 Henry. So let's take your option 0.1 Henry. Yeah, we are getting C option correct. So these are all the question. Let's take one more question, and that will be your last question of the magnetically coupled circuit. तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा होगा इससे. So इसके बाद हमारा मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट जो है वो फिनिश हो जाएगा. So स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन. लेते हैं अपना लास्ट न्यूमेरिकल ऑन द मैग्नेटिक सर्किट. So let's take the numerical. So numerical is in the circuit shown in figure. The voltage measured between A and B is found to be 70 volt. Okay, so this is 70 volt.
The value of M is the value of M, that is mutual inductance. The value of M is, first we will see the option, then after that solution. 30 mH, then next is 100 mH, and the C option is 200 mH, and the last option is what? 70 mH. And your diagram related to the question is, it is 100 volt, and next we are having some coils, that is 100 mH and 200 mH, and they are given some dots, and in between dots they are marked as mutual inductance, and they have also marked the point A and point B, and across these points the voltage is given to you, that is of 70 volts. So this is about your question. Okay, so let's see the solution of the question. Okay, so in the circuit shown in the figure, the voltage measured between A and B is found to be the 70 volts, the value of mutual inductance. First, to have the mutual inductance voltage, the mutual inductance voltage in the secondary side is M di1 over dt. It is di1 over dt. Agree? Now, since in the given circuit, I2 is 0, so the voltage is due to, since I2 is 0, so in the secondary voltage is due to mutual inductance, agree? Because secondary winding में करंट है ही नहीं, तो वोल्टेज कहां से दिखाई दे रहा होगा? वोल्टेज दिखाई दे रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइमरी, और अगर प्राइमरी से वोल्टेज दिखाई दे रहा है, so this is called mutual phenomena. Okay, so I2 is 0. Now to have mutual inductance, I need V2 first thing, then it is di1 over dt, and you can also apply your KVL. So first I want to know V2, then di1 over dt. So let's first find the di1 by dt. Now KVL to the input side, KVL to your input side is what? 100 minus VL equals to 0, then 100 equals to L di1 over dt. Okay, so it is 100 and L is what? L is 100 mH and it is di1 over dt. ठीक है यहाँ तक? 100 cancel out, so di1 over dt is your di1 over dt is 1. Okay, 1. Ratios is bad, just 1. Okay, so your first problem is over. Now how we can find a V2? So this is interesting. How we can find your V2? Let's see. Now if you draw the diagram of the V2, let's see the diagram carefully. I'm just drawing the equivalent diagram to find your V2 or just BB. Just BB voltage, the voltage at the secondary side. Now just take, it is 100 volt, so it is 100 volt. Okay, it is 100. Then in between A and B, this is your A and this is your B, and in between there it is 70 volt. Okay, and this is plus minus, then it is V2. Okay, so apply just KVL on this side. Just apply your KVL in this loop. Okay, 100 minus 70 minus V2 equals to 0, then your V2 is equals to 30 volt. Okay, so the second problem is also over. Now just put the value and get the answer. Okay, so it is 30 and divide by how much? It is in milliampere, so it is 30, it is 1, so your answer should be 30 millihenry. Okay, so option number A is correct. For this question your answer should be 30 ms. So this is about your magnetically coupled circuit, and in the first part we see the analogy between the इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट. वहां से जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इन जनरल, और जहां से न्यूमेरिकल पोर्शन बनते हैं वो तो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट. दो इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, एडिंग पोलैरिटी में, सब्ट्रैक्टिंग पोलैरिटी में, पैरेलल में लगे हुए हैं, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग पोलैरिटी में. म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्या फार्मूले होते हैं, कपलिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव होगा. आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द मैग्नेटिक सर्किट. सो इट इज जस्ट फिनिश योर मैग्नेटिक circuit.